एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. It's very practical, it's very useful. I have made sure it's not complicated. I made sure it's not something which is too much superficial. Okay, तो आज हम बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि प्रेयर्स का क्या रोल है. ओके, तो आज का एजेंडा काफी सिंपल है. We'll have today's question. I'm very interested to see how you guys answer that. And then we'll discuss various points about God, prayer, मंत्र क्या है, उसके effects क्या है. Okay. So, all right. So the first question for today, and probably the most toughest or the most complicated question जो हमने जो मुझे पूछना है वो ये है, what is your understanding of God? Like I said, we need not go in like too much of detail, but just 3-4 सेंटेंस में आप बोलो क्या है आपके हिसाब से गॉड क्या है भी या नहीं है वो तो अलग डिस्कशन है, बट गॉड क्या है आपके हिसाब से अगर आप बिलीव रखते हो तो. Just looking for a couple of opinions. Let's start with who wants to volunteer. Looks like everybody on mute today. I'll take a chance. Sure. Okay, I feel that there is some superpower which is existing, which actually helps us, answers our wishes, listens to us, and then also guides us directly, indirectly. Okay, so At that is every God. step, there is some power existing. Okay, fine, fair enough. So there is a power existing which we call it as a God. Okay. Anybody else? Bhaiya. Yes, Shruti. So maybe God is the superpower which exists beyond the science and beyond everything. So there is that trust or yeah, that was only. Okay. You were saying something else? You wanted to add something else? No, Bhaiya. No. Okay. Got it. Okay. So it exists beyond anything and everything in short way. That's what Shruti is saying. Wonderful. Any other person wants to volunteer? किसी और को बोलना है कुछ? या मुझे भी लाइक बताना था कि मेरे हिसाब से भगवान क्या हो सकते हैं. क्योंकि देयर इज नो प्रूफ या कुछ है नहीं एज ऑफ नाउ मेरे को जो पता है. तो आई सी गॉड एज नॉट एन एंटिटी. तो मुझे नहीं लगता कि गॉड कोई एक एंटिटी है, लाइक एक पर्टिकुलर चीज जिनको हम डिनोट कर सके लाइक ही इज गॉड, ही हैज ऑल द सुपर पावर्स. मुझे लगता है कि वो एक काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है या समथिंग वेरी वेरी बेसिक जो हर चीज में दिखाई देता है. सो जैसे कितने सारे अपन कैप्शन सुनते हैं कि लाइक यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड या कण कण में भगवान है. मतलब उसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज सम काइंड ऑफ एनर्जी या समथिंग वेरी बेसिक which I find it difficult to comprehend. Okay. Yeah. Fair enough. All right. So that is another view which says कि God सब जगह है तो ऐसा नहीं है कि वो that is hard to comprehend. But to say there is no proof of God is actually not a right statement, because it's not a proof for us doesn't mean it's not a proof for everybody. Okay. All right. That is one more opinion. किसी और को कुछ बोलना है? Hey Sumant, sorry मैंने लेट ज्वाइन किया. क्वेश्चन तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है आज. So I just wanted to say that question बड़ा इंटरेस्टिंग है. Maybe I'll discuss answer later क्योंकि ये बोलने नहीं दे रहा है. So it's okay, you can continue. No, you can just pitch in couple of sentences. I just think no, I won't be able to talk. It's okay, sorry. Okay. I'll just type in. Okay. Yeah, you just message me in the group, because it's interesting to know those अलग-अलग तरह के लोग क्या-क्या सोचते हैं. Because some of us have
realized it. Okay. All right. Yeah, just text it so that it's useful. All right, guys, we have gone a lot of detail because I think it's important for us to understand what we think, what is the current understanding right now. आज का class God के बारे में नहीं है, but it's without having some kind of perception of God, really, can we really pray? I don't know. I don't think so. मुझे लगता नहीं है कि हम बराबर से प्रे कर पाएंगे अगर गॉड क्या है यही इसके बारे में कुछ भी परसेप्शन नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है तो. ओके, तुलिका, यू वांट टू ऐड समथिंग? Actually, Sorry, I sorry. don't necessarily right now believe in the concept, so I won't have anything to add. Got it, got it. Okay, no problem. So you see, why we say one more view where, hey, wait a minute, how can I talk about God, but there's no God, first of all, right? So that is also one more valid opinion. All right, I think we're good here. We have spent quite a bit of time, in unless anybody else wants to add something, like some new point or uh, new thing to the discussion. Nobody? Perfect, no problem. All right, guys. So this question मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये important है एक तरह का perception के लिए कि God क्या है, क्योंकि so most confusing topic right now जो world में है, एक तरह से सबसे complex question है, सबसे confusing भी है, और बहुत लोग बोलते हैं मुझे पता है बट उन्हें पता नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो है ही नहीं. So it's a very complicated topic. Today's class will not deal with it because there's actually many like there are some fantastic videos in YouTube. I can forward the links to you where they will go in detail, like concept wise, what is the concept of God in different religions, and especially what is the concept of God. Is it an entity? Is it a power? Is it an energy? Is it something you can realize? So fantastic detail. I think there is too much clarity. Actually, people who know about it, they have too much clarity, and people they don't know about it, they have too much confusion. बहुत ही ये weird और बहुत ही एक तरह का tough concept है. जब तक समझा नहीं तब तक ऐसे जब तक realize नहीं किया है तब तक clarity से नहीं बोल सकते हैं. Okay, so but the point is why I brought God into picture is because this class is little bit inclined towards spiritual class. Just a bit of it, because जब हम prayers के बारे में बात करते हैं, basically we have to pray to something, right? Some form or formless or something. Until unless we actually can relate to something, we will not have any belief in it, and because of that we will miss on it. We will miss on the power of it. Okay, so I just want to keep to discuss very simple and basic. So हम बहुत ही overview से जाएंगे, बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे. But basically question आता है, who is God या what is God? Can you just tell us, like, is it a person? It is a power, but how do we know it's a power? It's a very tough question. So different cultures have approached in a very different way. And कौन बोलता है ये सब हमें? ये सब बोलते हैं जो लोग realize कर चुके हैं. How do we know they realized? It's again one more question, but we don't go into that. But can you guys see me? Yeah. And Yeah. Okay, perfect. All right. Sorry guys, I'll edit all of this in the final presentation, so that's not a problem. In the video, I'll just edit it. So all right. So हम concept के बारे में लेते हैं कि God क्या है, इस पे हम discuss कर रहे थे. So different religion में different approach लिया गया है. जैसे Jainism, Buddhism में it's about self realization, and people who are self realized, एक तरह से हम उसको सिद्ध बोलते हैं. और तीर्थंकर का concept है कि अवतार लेते हैं लोग, वो जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है. बुद्धिज्म में सिमिलर कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है. बट अपार्ट फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत सारे देवी देवता भी हैं जो तरह तरह की सिद्धियां देते हैं, राइट? तो ये एक तरह का फॉर्म वाले गॉड है जिसको हम कुछ रिलेट कर सकते हैं. बट हिंदुइज्म या इंडियन रिलीजन इतना वास्ट है कि वो बहुत सारे फॉर्मलेस को भी एक्सेप्ट करता है कि ओके, यू डोंट बिलीव इन गॉड, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल
reach your maximum potential, you can reach to the final pinnacle of human knowledge or existence without even having any belief in God. So Hinduism has this very vast way of looking at things. Okay, so formless भी है जिससे हम बोल सकते हैं वो है, okay, कि वो एक तरह का God can be formless, not necessarily in a particular form. Okay, so that is at a very very top view level religion wise. But when you actually realize what is God within you, many people say there is God in you, there is God in every living being, सब में भगवान है, सब living non living सब में ही भगवान है. तो उस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल वे में हमारे वे में, if we realize our soul, our आत्मा, people who have realized they say कि आत्मा और परमात्मा का तत्व सेम है. So basically they are saying we are just a small particle of the super particle. Okay, again, if you don't believe, that's fine. It's not like you have to believe it. मैं बस बोल रहा हूँ वो क्या बोलते हैं. So इसलिए वो बोलते हैं if you realize it, in short, you can actually feel it. You cannot express it because language is not enough to express it, but you can feel it. We can technically feel it. Okay, so ऐसे कौन बोलते हैं? जो enlightened लोग हैं, जिन्होंने महसूस किया है, वो बोलते हैं. सब लोग बोले तो अलग बात है, बट वो उन लोग का ऐसा कॉन्सेप्ट है. ओके, बट इन शॉर्ट, टू आंसर दिस क्वेश्चन भगवान क्या है, बहुत डीप स्टडी चाहिए. और डीप स्टडी भी चाहिए, एक तरह का सीकिंग चाहिए फर्स्ट कि ओके आई वांट टू नो क्या है. एंड मोर देन दैट, एक तरह का इंक्लिनेशन भी चाहिए कि आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज दिस. ओके, सो मेनी ऑफ अस मे नॉट बी इंटरेस्टेड एट ऑल, कंप्लीटली फाइन. बहुत लोग, आप लोग स्टूडेंट्स हो and this is like the last thing you want to think, so it's all right. And we also have a category जहाँ पे वो बोलते हैं कि okay, you know what, there's no God. Like, I'm a very scientific person and I truly believe there is no God. Everything is controlled by laws, by nature, and by this creation. We have this big mighty universe जो law से चलता है, जो अपने inherent form से चलता है. They are more scientific, more believe in the scientific proofs. Okay, so different people have different concept, but just there is a point of conflict here, and this is actually a major point of conflict. बहुत सारे लोगों के बारे में इतना conflict होता है कि वो इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं कि you know what, this is not at all a thing to think about कि भगवान क्या है कि नहीं, ये सब में पढ़ना ही नहीं है. Okay, so I just want to present one last slide on science versus religion. Why today's science versus religion is a kind of a conflict. Okay, आज का science, like today's science, they are actually a little bit acknowledging that there is something they don't know, and there is something they cannot reach to. So when they try to go less and less and less, like low and low and low, they are going to atomic, subatomic, even subatomic level. पावर कहाँ से आ रही, कुछ भी चीजें के लिए क्रिएशन में पावर कहाँ से आ रहा है? लाइक बेसिक क्वेश्चन है कॉन्शियसनेस का, कि एक आदमी अभी जी रहा है और वो मर रहा है, तो क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? इट्स नॉट जस्ट अ माइंड, इट्स नॉट जस्ट अ बॉडी, देयर इज समथिंग एल्स जो वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं. और एज पर टुडेज एक्सपर्ट्स, जो एक तरह से काफी लो लेवल पे काम करते हैं, एक तरह से बहुत डीप लेवल पे काम करते हैं, उनके हिसाब से दे हैव क्लासिफाइड इट एज अ हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि दे कैन नॉट जस्टिफाई कि क्या है. राइट, एक पर्सन जी रहा है, मर रहा है, दोनों में फिजियोलॉजिकल डिफरेंस वो मैप कर सकते हैं, मेंटल डिफरेंस मैप कर सकते हैं, बट वो और ऐसा क्या चीज है जो वो मैप नहीं कर पा रहे हैं. Science little bit they are acknowledging कि there is something that they don't have answer to right now. Okay, but traditionally they are in opposition because they say कि it's a concept which is very very vague, so very very hard to prove, and science depends on proof. So that's why they do not accept it. Okay, and also many times religion को वो एक bunch of superstitions जैसे बोल देते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, it's a meaningless, pointless, एक तरह से illogical exercise ऐसे ऐसे present करते हैं. और like I said, it's too confusing and complex for a normal man. Like, I don't care कि
how much clarity is there in that. मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे बाकी चीजें, बहुत चीजें जिस पे ध्यान देना है, तो इस पे अभी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि सब छोड़ देते हैं. और many people can ask, hey, what is the proof of God? Like, give me proof, I'm ready to accept. I'm not saying that I'm not accepting it. Just मुझे कुछ proof तो दो, मुझे prove करके दिखाओ, right? All these things are there, and that is why. And apart from this, there is something inside which says, which always wants to move up, and it almost goes in the opposite way. Like many people here said, there is a power. They don't know, but they can feel there is something. There has to be something. It cannot be a random occurrence कि randomly एक planet पे आता है, randomly लोगों का अलग-अलग phase है, अलग-अलग चल रहा है, randomly सब कुछ हो रहा है. It's too random to actually think there is nothing, right? There people have this view. Some people have this view, and because of all this view, many people don't have a proper balanced idea. They don't have a proper balanced idea. They don't know where to draw a line between science and religion, and बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज सही है, एक तो ये बोलता है, एक वो बोलता है. लाइक टू मच कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, और अभी तो सोशल मीडिया और इंटरनेट का एज है. So everybody has their view, like I have my view. Everybody has their view. Everybody has their opinion. Everybody has their way of thinking. So when everything comes up, it comes like a big ball of confusion. Okay, I'm acknowledging that there is something like this here. And today's approach, especially, I've made sure it's not at all tangled. Like वो complex चीजों में हम नहीं जाएंगे. यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, भगवान कहाँ पे रहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब के लिए बहुत डीप स्टडी चाहिए, और उन सब के लिए एक लेवल ऑफ रियलाइजेशन चाहिए बिफोर आई इवन स्पीक. ओके, बट I want you to understand, don't confuse what I'm going to teach you today, especially don't confuse it with today's age of gurus or today's age of rishis. What ancient rishis were, what our old what our original concept of mantra and prayers is there, it is very different from current age. Okay, so क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग काफी नेगेटिव है, बताते पॉजिटिव है, बट अंदर ही अंदर बहुत नेगेटिव है. इस तरह के लोगों को आप रिलेट मत करो. ओके, क्योंकि जो मंत्र है, मंत्र का जो पावर है, it has nothing to do with any religion. It doesn't matter you believe in religion or not. It doesn't matter actually even if you believe in God or not. It really doesn't matter. जो मंत्र का पावर है, मैं आपको बताऊंगा कि actual way क्या है वो पावर का, how you can feel it. You don't have to believe me also. Okay, so today's class is more of a practical class. It's practically beneficial, and I would say most of it is from experience. I'm not saying because I read it. I'm not saying because I understood it. I'm not saying because I believe in it. I'm saying because I felt it, and I'm saying because somewhere I have experienced some of it. Okay, so first is the class is about the power of prayer, right? Very interesting class, because till now हम यही देख रहे थे कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे और पावरफुल बनाए, हम अपने आप को कैसे इस तरह के पोजीशन पे पहुंचा है कि जहां से सक्सेस हो फेलियर हो आदमी को बुरा लगना मुश्किल है. वो ऐसे स्टेज पे पहुंचाने का प्रयत्न है कि from where you have a very strong mindset, you don't have a very weak mindset कि जहाँ पे बहुत confusion है, बहुत ही stress है, right? So that is all about inner development. But prayer, at first look, it looks as if it's something that we are acknowledging it's not in my control. There's something beyond whom I'm asking for help. Okay, so this very interesting class actually. And what is a prayer, right? अगर जो लोग प्रे करते हैं मोस्टली, लाइक हम कुछ मंत्र भी चैंट करते हैं, तो आई हैव जस्ट क्लासिफाइड प्रेयर इन वेरी सिंपल वे. ओके, one way I put it is heart to heart talk, nothing complex. You're not saying anything to anybody, you're just having a conversation with a superpower, if you believe superpower, or if some Bhagwan, अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो, but you're not chanting anything, you're just having a conversation. Hey, you know what, I'm in a bit of problem, why don't you help me out, why don't you do something, vaguely and very personally. Like if you want to open up to some, अगर आपके दिल में कुछ है, आपको बोलना है,
बाकी लोग पे आप नहीं ट्रस्ट कर सकते, या फिर आपको लगता है इसको उसको बोलने से और मैटर बिगड़ जाएगा, you want to vent out that feelings and you just go and you vent it out to somebody, and that is also, many people call that also a form of praying, where you talk to God and you talk to somebody whom it's like a venting out your feeling. Okay, that is one form of praying. Other is mantra. We have a particular way of praying to let's say God or to a power, and it's all codified as a mantra, right? So mantra can be in mostly two ways: either it is requesting for something, it is requesting to give something, or receive something, or it is just a praise. So we say, हे प्रभु आप बहुत अच्छे हो, आप ये दयालु हो, ऐसे वैसे, इस तरह का praise होता है. अगर आप मंत्र का ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो मोस्टली आइदर वी प्रेज गॉड or we request something, please grant me this, grant me this, grant me that. Okay, so that is a different way of praying, apart from like self-talk what I said. Okay, in today's class, depending on your views, like if you believe in a particular god, like अगर आप महावीर भगवान में मानते हो, अगर आप शिव भगवान में मानते हो, जिस पे भी मानते हो उस हिसाब से भी, या फिर आप किसी में भी नहीं मानते हो, आप मानते ही नहीं हो कि भगवान है, ऐसे लोगों को भी टुडेज क्लास, इट डजंट मैटर मच कि आपका मानना क्या है, कि भगवान है नहीं है, because today's class is very scientific, and today's class is actually using it. Not necessarily you have to believe in, you have to have a perfect clarity before you start using something, right? So today is actually more of a practical class. First thing I want to talk about before I go in mantra is, question comes, how should we pray, right? Now, if you don't pray, like I said, pray doesn't mean like actually going to an idol and praying. That is just a way of praying. Praying, it can also be heart to heart talk, but if we want to pray to a god, तो कैसे हम pray करेंगे भगवान को, right? First concept क्या है prayer में? It should be non result orientation. Means ऐसा नहीं है कि आपने प्रे किया, आपने कुछ भगवान से मांगा कि मुझे ये दे दो, और वो नहीं दिया भगवान ने, या वो नहीं हुआ, and you get disappointed and you say, wait a minute, there is no god, there is no nothing, because मैं इतने जरूरत में था तब कोई भी मेरी हेल्प नहीं करा, I prayed so much but nothing worked out, right? Now you see how this approach connects to the failure class, where we get attached to results, and because result is not in our favor, we start all kind of negative trends. And praying, if we go for result based, कि ठीक है मैं बहुत प्रे किया भगवान से, दिन में 10 घंटे प्रे किया कि मुझे 90% मार्क्स दे दो, बट नहीं आए, यू नो व्हाट, भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा है, राइट? वो जो भी है वो सुन नहीं रहा है. तो नॉन रिजल्ट ओरिएंटेशन से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मांगा तो दे ही देंगे कुछ भी. ओके, सेकेंड इज नॉन, इट्स नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. Prayer is not something you do, okay, please give me, so I will pray. If you give me 10,000, I will give you 5,000. If I do this, if you do this to me, I will do this to you. That is a very basic form of praying, कि आप मुझे प्रॉब्लम से सॉल्व कर दोगे तो मैं आपको ये करूंगा. People do it, many people say it works, but is it an ideal way of doing? मुझे तो नहीं लगता है, because एक तरह का transaction हो जाता है. And praying is something very divine. It's not like a transaction basis. Okay, so we should not do like this. So how should we pray? First thing is to pray with faith. Faith मतलब भरोसे के साथ. किस पे भरोसा? एक ऐसी चीज पे. See, we are all human beings. Okay, so there is definitely something beyond us that we probably do not know, right? If you take in context of universe के में तो आपको सबको पता ही है, it's a fact, right? In universe, sun is nothing, in front of sun earth is nothing, and in front of earth we are nothing, and in front of so many crores of people we are actually nothing, right? So if you think in that way, there has to be so many things that we actually may not know, right? So rather than starting to question each and everything, that this is there, that is there, I don't know, that's why it doesn't exist, this is a way of complicating things, I would say. So if you pray with faith
कि ठीक है कुछ है और ठीक है मतलब भगवान मेरी सुन रहा है, इस तरह से आप प्रे करो। और सेकेंड, प्रे विथ फोकस। फोकस मीनिंग when you are chanting something, try to put as much attention as you can, because अभी मैं आपको कुछ मंत्र के बारे में बात करूंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मंत्र रिलीजन से टाई अप मत करो कि ये भगवान में भरोसा है तो ही काम करेगा, ओके। बट उसके लिए मंत्र को काम करने के लिए आपको फोकस तो करना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दो। कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो इफ यू पुट फोकस, that's when the real power will come to you, okay। And third way to pray is pray with love, not with like kind of want कि मुझे ये चाहिए 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 तो ही मैं प्रे कर रहा हूँ, ओके। प्रे विद लव आल्सो। वी हैव सीन मेनी एग्जांपल्स इंडियन हिस्ट्री में, तो एग्जांपल्स पे एग्जांपल्स है जहाँ पे लोग भक्ति में इतना लीन हो गए कि they actually felt like one with God. You can say it's a story, you can say it's a book, but you have to understand, just because we didn't see from eyes doesn't mean it's false, okay। And just because everything we see, it may not be true also, okay। So pray with love, let's not go in pretty deep। And there's two way of praying, one is speaking out, like mantra आप बाहर उच्चारण कर सकते हैं या अपने अंदर अंदर भी उच्चारण कर सकते हैं, okay। And actually there's one more form of praying which I think personally everybody should try, because it has nothing to do with any god, any religion, and that is pray in silence। You don't actually say anything, you don't actually do anything, you just be silent and you just acknowledge, okay, I'm in a problem, whatever it is, you just acknowledge and be 5 minutes in the silence. That is also a form of praying, okay। So this is a very rough outline of how we pray before we even go with mantra, because if you don't go step by step, if you don't understand things step by step, directly if I give you the end product, क्या होगा कि आप end product तो है ठीक है, ये है तो सही, but आपको सही तरह से आएगा नहीं कि सही तरह से in short, like what is the better way of doing it, okay। So that's why I'm just covering a bit। So now let's go to mantra। This is the core of the class, this is the actual useful part of this entire class today, okay। So mantra kya hai, first of all? So you have to understand, not have to understand, people know, everybody really know, everything we speak has an energy level, right। You just think about it, okay। जब आप किसी के बारे में 2-3 घंटे बुराई करोगे और आप देखो आपका माइंड में कितना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपका सर दुखने लगेगा और ऐसा लगेगा बस यार छोड़ो अभी बस हो गया, आई कांट टेक इट एनीमोर, राइट। Mind can actually feel burdensome agar if you let's say speak ill about somebody, right। Same way, if you actually speak something good about somebody, 2-3 hours speak 2-3 घंटे बोलना तो मुश्किल है, but suppose आपने बोला तो you will feel much lighter, you will feel much different, and you will be much joyful। What is the difference here? The difference is whatever you're speaking has an energy level, right? It's a very scientific thing, it's not like I'm saying, everything has a energy level, and mantra specifically, they are kind of coded with very high energy and high vibrations, okay, and it can be easily felt। It's not necessary that it will not be felt, it is just a concept, you can actually feel the vibrations, okay। And these are basic things, like I can say something good also, but mantra has one extra characteristic, it has the power to transcend the mind। Transcend the mind meaning it can take you to a zone where it's hard to describe what that zone is। आप समझा नहीं पाओगे कि वो क्या है, क्योंकि आपको भी कुछ नाम नहीं है, कुछ टर्म नहीं है, राइट, बहुत वेग रहता है। It can take you to a zone where it can go beyond your mind also, it can go in a zone of silence, it can go in a zone of deep absorption, और ये तो बहुत easy है, this is not at all tough, this is not at all complicated, but it has power to do that, okay। And I just wanted to say one more thing is, does it actually happen? Some people can say, okay, all these concepts are good, but does it actually happen, right? So if you see in this world, electricity, can somebody show us electricity? Nobody can show us electricity. They can prove it to me,
Okay, you see, I will put the light to it and the light will glow. I can see the light. Where is the electricity? They can tell me, no, no, wait a minute. Electricity is the source of the light, right? How we say the Atma is the source of everything. That's the same way we say electricity is the source of all this power. But we can't see electricity as such. Same way we can't see magnetic force as such. Doesn't mean it doesn't exist. Okay, all of these things exist. सेम वे मंत्र की जो शक्ति है जरूरी नहीं है वो हमें दिखे कि हमें दिख रहा है कि ये पावर है. मंत्र में आज चैंट कर रहा हूँ, ये ग्लास ऊपर उठ रहा है, मैं ऊपर उठ रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो सब हो, बट यू कैन फील समथिंग, यू कैन फील इट, यू कैन फील दैट एनर्जी इफ यू ट्राई इट आउट. ओके, और मंत्र की शक्ति जो है वो कहाँ है? How to realize the mantra is this? There is two way. Two are the basic condition of satisfying a mantra. One is the pronunciation. It has to be correct pronunciation. अगर आप गलत से मंत्र बोलोगे तो वो इतना पावर नहीं देगा, उसका भी रीजन है. And second is it has to be repeated. Repeated means just एक बार, 10 बार, 100 बार बोलने से आपको फील हो जाएगा, जरूरी नहीं है. Okay, maybe you have to repeat it. How many times? Give it again short, like 5 minutes a day for 60 days. That is the golden mantra I have. To see if it works or not. Okay, so मंत्र की शक्ति आती है सही pronunciation से और सही repetition और उसको repeat करने से. Okay, and today's age has instruments, like you have to understand, maybe previous people जो ancient लोग हैं उनके पास शायद सिर्फ realize करके देने का तरीका है, शायद they were not proof based or they were not they didn't have experiments or apparatus to prove it. But today's science has apparatus to prove it, and they have done experiments and they have actually found out कि जब हम मंत्र चैंट करते हैं उस टाइम के एनर्जी जो है वो इट्स एट प्रोबेबली द पीक एनर्जी जो एक ह्यूमन बॉडी फील कर सकता है, जो ह्यूमन बॉडी महसूस कर सकता है. Okay, that is, they have mapped the energy and they have concluded कि yes, this mantra actually have a lot of energy. अब ये तो साइंटिफिक हो गया, ये तो रिलीजन से कोई लिंक ही नहीं है. It's now acknowledged by science. They say, okay, we believe there is no God, don't bother about God, but we acknowledge that yes, if you say this mantra, if you chant this, definitely energy will increase. That we can say. We don't want to go beyond that. That is fine for us. Okay, and they have also done experiment on Rudraksh, where ancient people used to wear Rudraksh, and if you see, if there is a water, if you hold the Rudraksh mala, you will see it will go in a certain direction, and as soon as you chant mantras, it will go in the opposite direction. There are a lot of videos in YouTube. I haven't tried particularly, but like there is enough videos to suggest that. So there is an experiment which also says like negative things can turn to positive. Like Rudraksh experiment says that if you chant mantra, anything negative can be turned to positive. Okay, so this is again one more thing about science and mantra, how scientifically these are proven. I'm not telling you just a concept. Okay, and different mantra have outer expressions. So it's just a way how mantra will come out. If you chant a particular mantra, it will create energy in a particular way, and it will express outside in a particular way. Okay, and this is from thousands of years. This is not the first time we are chanting this mantra. तो ऐसा नहीं है कि ये अभी का अभी कॉन्सेप्ट है कि हम फर्स्ट है जिन्होंने ये ट्राई कर रहे हैं, हम फर्स्ट है जो इस पे बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंटर है जिन पे ये एक्सपेरिमेंट है कि ये मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा. बहुत सारे मंत्र हजारों सालों से है, नॉट इवन 100, हजारों सालों से, और हजारों सालों में लाखों करोड़ों लोगों ने ये ट्राई किया है. ट्राई करने से ज्यादा इसको अपने बेनिफिट में यूज किया है. ओके, एंड व्हेन जब वो लोग अपने बेनिफिट में यूज करके बोलते हैं कि ये काम कर रहा है, वी कैन से इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट. वी कैन से ओके वो तो उनके लिए कर रहा है, मेरे लिए नहीं करेगा. ओके, सो आई वांट टू जस्ट क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स अबाउट मंत्र, क्योंकि अंटिल अनलेस आपको थोड़ी श्रद्धा होगी या आपको थोड़ा विश्वास होगा कि यस ये पॉसिबल है, आई डोंट थिंक कोई करेगा वो, और आई डोंट थिंक कोई इसका सही से यूज कर पाएगा. मैं तो जब से समझ रहा हूँ तब से यूज कर रहा हूँ, एंड आई कैन फील द डिफरेंस.
बट आई कैन अंडरस्टैंड लाइक डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट ओपिनियंस। इसके लिए मैं इतना बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये हम फर्स्ट नहीं है जो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं इट्स नो प्रूफ। ओके, ये हम पे काम कर रहा है, जरूरी नहीं है हमारे हमारे पड़ोसी पे भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको इतनी श्रद्धा नहीं है, हो सकता है वो बराबर से कर ही नहीं रहा। ओके, सो पॉइंट क्या है कि दिस इज अ पावर, देयर इज अ पावर। ये पावर के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं, ये पावर के बारे में हजारों सालों से लोगों को पता है। ओनली क्वेश्चन इज क्या हम वो पावर को यूज करेंगे या नहीं। दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज एक्चुअली द ओनली थिंग। हम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दिस पावर, एंड आई थिंक इट शुड नॉट मैटर मच, बिकॉज जरूरी नहीं है कि मैं मंत्र करूंगा तो ही मैं लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा, या फिर मैं मंत्र बोलूंगा, या फिर मैं थोड़ा थोड़ा बहुत प्रे करूंगा तो ही मैं सक्सेसफुल होऊंगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज देयर इज अ पावर आउट देयर, क्या हम उसको यूज करेंगे या नहीं, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। ओके, सो इमेजिन कि ओके हम यूज करना चाह रहे हैं मंत्र का पावर। कुछ मंत्र के बारे में हम बात करते हैं, जस्ट आई लिस्ट इट आउट, क्योंकि यूट्यूब में सब है, और यूट्यूब में मैं आपको लिंक्स भेजूंगा एक स्लाइड पे जो बेस्ट है हर एक मंत्र के उच्चारण के बारे में। मैं बोल दूंगा, मैं भेज दूंगा, चेक इट आउट इफ यू वांट, यू कैन फॉलो इट। ओके, सो कुछ फेमस मंत्र क्या है जो एक्चुअली में बोलते हैं कि उनको आप यूज करो और उनसे आप लाइक बहुत कुछ पा सकते हो, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। ओके, तो कुछ फेमस मंत्र के बारे में हम बात करते हैं, तो मैं 5-6 ही देता हूँ। छोटे छोटे हैं जो तो बहुत सिंपल है। एक है ओम। ओम जो मंत्र है बोलते हैं उसको बीज मंत्र है। ओम के ऊपर तो 2-3 घंटे की क्लास भी कम है, बट अगेन अच्छे अच्छे है वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स हैं। ओम जो है वो एक ऐसा मंत्र है जो हैज द एबिलिटी टू ट्रांसेंड द माइंड। लाइक इफ यू, अगर आप ओम का उच्चारण करते हो प्रॉपर वे में, ओम, ऐसे एक बार ओम बोलो और थोड़ा गैप दो 5-10 सेकेंड का। इफ यू जस्ट से ओम, hold on for a couple of seconds and then you say again om, you don't have to do even for long time, within like 4-5 days only आपको पता चलेगा कि आपका माइंड एक्चुअली में शांत होता है, आपका माइंड एक्चुअली में पीसफुल बनता है। यू कैन एक्चुअली फील द डिफरेंस। ओके, दिस इज लाइक सपोज टू बी, ये मंत्र जो है वो बोलते हैं किंग ऑफ ऑल मंत्र है। एक तरह से एक होता है कि हम एक प्रॉब्लम है जिसको हम एक पेज में डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक बुक में डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उसका एक हम छोटा सा फॉर्मूला दे सकते हैं कि ये फॉर्मूला समझ गया मतलब ये बुक के सारे प्रॉब्लम आप कर सकते हो। उसी तरह का है ओम मंत्र कि आप ओम, सिर्फ ओम चैंटिंग करोगे और बाकी सब नहीं करोगे तो भी वो ओम सबको कवर कर सकता है, इतना पावरफुल है। और इसलिए सारे रिलीजन में ओम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। ओके, तो जस्ट छोटा सा एग्जांपल है कि ओम मंत्र है। आई रियली वांट ऑल ऑफ यू कि आप कम से कम एक हफ्ता 10 दिन तो ट्राई करो, और जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट, ज्यादा भी नहीं, ऐसे नहीं कि आपको घंटों घंटों करना है, जस्ट 5 मिनट्स में कितने बार होंगे, मे बी 50 टाइम्स, राइट? 50 टाइम्स इफ यू से ओम अ डे, मेक इट जस्ट 10 डेज। 10 डेज में तो ये क्लासेस चलेंगी, 10 डेज में देखते हैं कि एक्चुअली में कुछ डिफरेंस है। कैन यू फील सम डिफरेंस, और इफ यू कांट फील एनी डिफरेंस, ओके। सो ओम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और बहुत प्रैक्टिकल हो गया कि ये एक मंत्र काफी है आप आदमी को टू गेट स्टार्टेड इन दिस जर्नी। देन देयर आर अदर मंत्र, गायत्री मंत्र है जो कि बोलते हैं, और बहुत वो भी काफी पावरफुल है। नवकार मंत्र है जैन्स के लिए, भक्तामर स्तोत्र है जैन्स के लिए, जो कि एक ऐसे मंत्र हैं जो कि ऐसा नहीं है कि वो बस किसी ने बना दिया कुछ और किसी ने बस एक वो स्तुति है, ऐसा नहीं है। एवरी लेटर वी स्पीक, एवरी लेटर जो हम उच्चारण करते हैं वो अंदर से कहीं से आता है, तो एनर्जी फ्लो हो रहा है, एक पर्टिकुलर वे में एनर्जी फ्लो होगा, उससे यू विल सी कि आपका अंदर क्या क्या चेंज आता है। ओके, सो देयर इज नवकार मंत्र, भक्तामर मंत्र, देयर इज सरस्वती मंत्र, and there is Rudra Stuti. So these are all different mantras
एंड आई हैव जब मैंने ये तरह तरह के मंत्रों को कुछ दिन ही किया, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं किया, बट कुछ कुछ दिन में आई कैन फील एक एक मंत्र एक एक तरह का एनर्जी है। तो अगर मैं रुद्र स्तुति करता हूँ तो वो मुझे इंस्पायर करता है, हाई एनर्जी में लेके जाता है। और ओम चैंटिंग करता हूँ तो वो मुझे एकदम पीसफुल काम करता है। ऐसा नहीं सब मंत्र एक तरह ही काम करेंगे। ओके, कुछ मंत्र बहुत हाई एनर्जी में ले जाएंगे आपको, एक तरह का इंस्पायरिंग स्टेट में लेके जाएंगे, और कुछ मंत्र आपको बहुत काम करेंगे, आप बहुत एजिटेटेड हो तो आपको कूल करेंगे। ओके, तो इसके लिए सपोज आपको पीस चाहिए तो ओम इज द बेस्ट मंत्र। अगर आपको हाई एनर्जी और हाई वाइब्रेशन चाहिए तो रुद्र स्तुति में बहुत हाई वाइब्रेशंस है। और बाकी नवकार मंत्र, भक्तामर मंत्र, ये सब तो आप भक्तामर स्तोत्र ये जब आप सुनोगे या बोलोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे एनर्जी है। ओके, बट यू कैन फील all of this. This is not a theory concept, this is not a scientific concept. Only thing is, are you willing to use it or not? That is the only question. Okay, and just I want to say, what is the effect of praying? Okay, all these things we heard, we हमने मंत्र के बारे में भी सुन लिया कि ठीक है मंत्र चैंट करना चाहिए 5 मिनट अ डे। ओके, मैं करूंगा या नहीं करूंगा जो भी है, बट इन सब के इफेक्ट क्या है, राइट? First effect is it will give you a kind of joy and peace if you have a connection. अगर आप श्रद्धा से या फिर आप कनेक्शन कर पाए, थोड़ा बहुत भी कनेक्शन कर पाए, थोड़ा बहुत भी एक्नॉलेज करके आप आगे बढ़ गए, राइट? नॉट नेसेसरी स्टार्टिंग में सब प्रूफ चाहिए, गो लिटिल बिट एंड सी कुछ हो रहा है नहीं, गो लिटिल बिट मोर एंड सी, राइट? स्टार्टिंग में सब परफेक्ट है तब मैं यूज करूंगा, आई थिंक it's not going to work out that way. Better way is go little by little and approach. So आप थोड़ा सा अगर आप फेथ के साथ करोगे तो आप देखोगे एक्चुअली में ये आपको एक तरह का एडिशनल जॉय देगा जो कि खाली बैठने से नहीं मिलेगा, या टीवी देखने से, गेम्स खेलने से भी नहीं मिलेगा, जो मंत्र से मिलेगा। ओके, सेकंड थिंग इज हैव इट लाइक एवरीडे फूड, लाइक जैसे आप खाना खाते हो एवरीडे, वैसे ही एवरीडे 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट, 2 मिनट नहीं तो 2-4 बार ही कुछ भी एक तरह का जो भी आपको अच्छा लगता है मंत्र, या फिर मंत्र से भी ज्यादा अगर सेल्फ टॉक में बिलीव रखते हो या फिर आप हार्ट टू हार्ट टॉक में बिलीव रखते हो तो आप उस तरह के 1-2 मिनट ही कर लो, ज्यादा नहीं तो यू विल सी अ डिफरेंस। ओके, एंड द पॉइंट इज दिस ऑल एड्स अप। एक इंडिविजुअल में कुछ नहीं कर सकता है, बट आप जब ये सब ऐड करोगे, मेंटली स्ट्रांग रहना, लीडरशिप का हमने देखा, सक्सेस फेलियर के कॉन्सेप्ट देखे, ये भी कॉन्सेप्ट जब आप ऐड करोगे देन ओनली यू विल बिकम पावरफुल। ओके, एंड मंत्र के तो बहुत सारे एक्चुअल लॉन्ग टर्म एफर्ट्स इफेक्ट्स दिखते हैं हमको, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दिखते हैं कि वो साइकोलॉजी पे कितना इम्पैक्ट करता है। बहुत कम देखने में आता है कि जो मतलब स्पिरिचुअल पर्सन है वो डिप्रेस्ड है, बहुत कम देखने में आता है, ऐसे दिखने में ही नहीं आता है कि वो डिप्रेस्ड है, राइट? और बहुत कम देखने में आता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस तो सबको रहता है, बट ऐसा नहीं है कि वो उसे डिप्रेशन में चला जाएगा या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बहुत फ्रीक्वेंटली, मीन्स इज नॉट स्पिरिचुअल। ओके, तो ऑटोमेटिकली गुस्सा नहीं आएगा आपको बहुत ज्यादा। और मंत्र के स्पेशली स्पिरिचुअल मेंटल इफेक्ट बहुत है, और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कैस्केडिंग इफेक्ट मंत्र के। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज आप कनेक्ट कर पाओगे। तो अगर आप मंत्र बोल रहे हो, आप पीसफुल हो, आप ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे, आप ज्यादा अच्छा फोकस कर पाओगे, आप ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा अच्छे काम कर पाओगे, और काम से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट? तो ये सबको अगर आपको ऐड करना है तो कुछ तो सोर्स चाहिए। सोर्स तो मोस्टली इंटरनली रहता है, माइंड ही रहता है। तो मंत्र इज अ वे ऑफ मेकिंग माइंड इवन मोर पावरफुल। ओके, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लाइक इस वर्ल्ड में हमको एनकरेज करने वाले कितने लोग हैं, राइट? इफ यू थिंक अबाउट इट, लाइक आपके लाइफ में एनकरेज जो आपको कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, यू नो यू आर डाउन, वो बोलेंगे कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू कैन डू बेटर। या आप प्रॉब्लम में, वो बोलेंगे कोई बात नहीं, इट विल गेट सॉल्व। या फिर आपको किसी की हेल्प चाहिए, कोई चाहिए कि आपके इमोशंस को समझ सके, कितने लोग मिलेंगे आपको? ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, हार्डली 5। दैट इज ऑल्सो बिग नंबर, बट हार्डली 5 लोग जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर जो आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। So my point is, why do we have to depend on the outside 5? What if they change? What if they don't remain the same? What if you had a fight और वो change हो गया?
बाहर से अगर आपको कोई अपलिफ्ट करना पड़े तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। rather than that why don't we go inside and say I will support myself। दूसरे encourage करेंगे बहुत अच्छी बात है, but main encouragement अगर अंदर से है तो वो बहुत एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी देगा आपको। और इनसाइड से encouragement कैसे आएगा आपके पास? until unless you have a strong mind, until unless you have a very clear mind कि क्या है ये, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मंत्र आप करोगे तो आपका माइंड वो काम करेगा, काम स्मूथ, और एक तरह से आपको क्लैरिटी देगा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मैं सब कर लिया तो भी, राइट? यू हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड इन अ वे। अगर आप अपने आप से ही बराबर से नहीं जानोगे, पहचानोगे नहीं, सो इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, राइट? और जब हम मंत्र का स्टडी करते हैं, ये लोग स्टडी नहीं करते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म्स क्या देखने मिल रहा है। वो सब इंस्टेंट मूवमेंट पे स्टडी रहता है, ठीक है हमने 2-3 महीने देखा, ये हो रहा है वो हो रहा है, एनर्जी ऐसे मूव हो रहा है, बट जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है उसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, उसको लिटरली क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। बट पर्सन कैन स्पीक विद एक्सपीरियंस। अगर वो सही में अपनी लाइफ देखेगा 6 महीने 1 साल बैक, ही कैन से मे बी आई डिड इट, दैट्स व्हाई थिंग्स आर डिफरेंट फॉर मी। Okay, that's why I'm stressing so much. And I'm also wanting to point out one more thing to you. I think we are little short, but in 5 minutes we should wind up. I also want to say one more thing to you. If you're not so religious, it's okay, ये end of the world नहीं है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में उन सब लोगों के लिए जगह है। जरूरी नहीं है आप रिलीजियस हो तो ही आप ये सब के यूज कर सकते हो। और सेकंड थिंग है, इंडियन सिस्टम में तो वेस भी है, नॉट नेसेसरी यू हैव टू बिलीव रिलीजन। आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन। मेडिटेशन से यू कैन रीच द अल्टीमेट। और चलो मेडिटेशन बहुत टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, योगा से भी है कि आप कैसे अल्टीमेट तक पहुंच सकते हो। इन सब में कहीं रिलीजन नहीं है, कहीं पे ये नहीं है कि आपको भगवान में मानना है या आपको गॉड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है तो ही आप यूज करोगे। ओके, सो आई वांट यू ऑल टू not mix mantra with religion, not mix it with the belief कि God है नहीं है, right? क्योंकि बहुत लोग को बहुत तरह तरह के concepts हैं God के बारे में, which is fine. We all are learning here, but the smart way to do this is to actually try out mantra and see if it works or not, right? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि practically मेरे इसमें तो we can feel energy. It's as simple as that. We can feel energy difference, we can feel the power of it, बहुत आसानी से हमको ये सब दिखेंगे। ओके, सो कंक्लूड मैं यही करना चाहूंगा कि मंत्र में पावर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैंने फील किया है थोड़ा बहुत। बट अगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग के बारे में जो बहुत रियलाइज्ड हैं, जो बहुत डीप इसमें है, उनको तो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट है, राइट? तो पावर तो है। सेकेंड थिंग इज not to confuse it with religion. Okay, it has come out as part of it but doesn't mean you have, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उसमें बिलीव करना है, ठीक है? रिलीजन में मंत्र का पावर यूज करने के लिए बस अब हम पे है कि हम उसका कितना यूज करेंगे और उसको कितने उसकी जरूरत है हमें। हो सकता है हमें उसकी जरूरत नहीं है, वी आर ऑल हैप्पी, फाइन, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लाइक आई सेड, अगर आपको कुछ चीज यूज करना है तब आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इसका यूज है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मंत्र में शक्ति है, अगर आपको पता ही नहीं है कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम पावरफुल थिंग जो क्योंकि इतना कॉमन है मुझे पता नहीं है, तो आप मिस कर दोगे। ओके, तो ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम हो सके जितना जल्दी एक्सप्लोर करें ये सब। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपके पास टाइम है उसके बारे में और डीप जाने के लिए, ठीक है? और लाइक आई सेड बिफोर, आई गेव यू लिस्ट ऑफ 5-6 मंत्र। ओम मंत्र है, गायत्री मंत्र है, नवकार मंत्र है, भक्ताम स्तोत्र है। डिफरेंट डिफरेंट लोग का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है इंक्लिनेशन, बट आई गिव यू द लिंक्स, ट्राई इट आउट वंस और ट्वाइस। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप फॉलो करो 10 दिन 20 दिन, देखो कुछ चेंज भी हो रहा है या नहीं। आइडियली तो ये एज अ प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि लाइफ में इनकलकेट कर लिया है, बट ट्राई इट आउट जस्ट इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट एंड सी। और कुछ कुछ चैंट्स तो बहुत इजी है, आपको बोलना टफ लग रहा है तो आप सुन लो। मंत्र की शक्ति में फर्क नहीं पड़ता है आप बोलो या सुनो,
another interesting aspect. You don't have to, आपको जरूरी नहीं है जो से उच्चारण करो, आप मन में भी सुन सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, सुन सकते हैं. It will be the same. And that's not what I am saying. That is what I have read कि ये same है. Okay. So that is the class about mantra today. I will, like I said, मैं आपको links भेजूंगा. But any questions anybody has? Let me unmute. मेरे पास एक क्वेश्चन है. Sure. तो जैसे मान लो कि मैंने मंत्र गलत पढ़ा है, लाइक कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो मैंने गलत पढ़ा है, लेकिन मैं पूरे लाइक श्रद्धा से पढ़ रहा हूँ या फेथ से पढ़ रहा हूँ, तो लाइक डज इट मैटर कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ उसको, या उतना ही इफेक्ट आएगा क्या एनर्जी का? एनर्जी का तो इफेक्ट आएगा, बट जैसे हम देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है वाल्मीकि ऋषि, राइट? उनको एक सिंपल मंत्र दिया था राम, उन्होंने मरा पड़ा, मरा 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 पड़ा, तो भी उनको मिल गई, क्योंकि उन्होंने इतना ब्लाइंड फेथ से वो पढ़ा. और फेथ जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज है. बट कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आप गलत पढ़ोगे, ट्राई टू अवॉइड इट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेवल का फेथ आज के टाइम पे लाना तो बहुत टफ है. until unless you actually go little bit ahead, उस लेवल का शायद नहीं आए. So try to avoid mistakes if you can, but it's better than not saying any day. Better than not saying it. Alright. Okay, good question. लगता है सब सिद्ध लोग बैठे हुए हैं. Any questions, guys? Shruti, you have any questions? I like to pinpoint you. No, Bhaiya, I don't have any question right now. Got it. Okay, all right. If there's no question, we can wind it up, but I just wanted to, Apurva, can you put your point about God? I think it's really beautiful point. I had put it in the chat. Yeah, can you say it out? ओके, तो मुझे ऐसे लगता था कि मतलब इट्स अ सेइंग कि गॉड ने ये नेचर क्रिएट किया है या यूनिवर्स क्रिएट किया है, बट अगर डे टू डे लाइफ में कनेक्शन की बात होती है तो गॉड एक ऐसे मतलब एक गॉड इज समवन जिस पे आप पूरा फेथ रखते हो, बिलीफ रखते हो, आप अपनी बातें करते हो, यू फील लाइक यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ ऐसे. लाइक द ओनली थिंग इज कि गॉड इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड सुप्रीम टू अस, क्योंकि शायद उनको एनलाइटमेंट हुआ है एंड दे एक्चुअली नो कि लाइफ कैसी है, उसको कैसे जीना चाहिए. एंड वो जो बोलते हैं अगर हम उनके पाथ पे चलो तो मे बी वी विल हैव एन डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद से बात करने जैसे गॉड के साथ अगर बात करते हो तो इट्स मोर देन सेम. द ओनली थिंग इज कि ही इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड हैज सुपर पावर्स. Okay, thank you so much. So Apurva, हम देखते हैं कि हार्ट टू हार्ट टॉक में ज्यादा विश्वास रखती है, which is again a form of prayer. Like I said, all these things are a form of prayer. All right, let me ask Tulika, what does she think? In the starting, she was like, there's nothing like that. So are you there, Tulika? Yeah, sorry, I had some internet issues. Could you please repeat that? No, I just wanted to know, now, do you feel little confident in mantra, or you still don't believe it? So regarding the chanting mantras, I have always been a believer of that, because as I also mentioned in my introduction once, like I started meditating very early in my life. Like when I was 18, 19, I actually attended a 10th meditation camp. So mantras is something that I have personally experienced. So it is something that I actually believe in, and also I agree with the content of the class regarding the mantras, regarding the power of Om and all the small mantras and how much they can affect your life in the long run. Got it. Okay, wonderful. See, if I just
pick out Tulika, Tanmay will feel bad. He'll say why he's picking only my sister, why not me? तो उसको भी पूछ देते हैं. You there, Tanmay? Hello. Yeah. So, to be honest, I am not so much of a believer in God, but like prayer, like you said about Om, like it is more of a general, and I do practice it sometimes before like exams so that I can get my mind to be bit settled down. Like we are at hyperventilating state, so I that's the thing I have about spiritual thing. got it. But I think Tanmay has a very simple way of doing. He'll say Om before exam, and if exam goes bad, he'll say Om Swaha.